Okay. Good morning, sir. We are live today. Morning, everybody. Sir, we will start with those questions which are already asked to us. Mahim Nadan Missan has asked, sir, what kind of technical questions will an electrical engineer face? Should I revise all my subjects before going for SSB? Okay. Fine. This is a very common question in the minds of aspirants, and technical questions based on your background or study do get asked. I will come to your answer slowly because a straightforward answer is not possible, because I have myself been an interviewing officer and I have been asking these questions, and I never left any technical graduate without asking a technical question. So some of you would have experienced that some interviewing officers do not ask technical questions. I have never done it. I have always asked questions. So that is one. So be prepared for that. Now see what happens. Let us say you have posed a question that you are an electrical engineer. And generally, what I have been seeing, the degrees which are more common today is electrical and electronics. Generally, I find these, or electronics and communication, they are very, very popular degrees. So I have interviewed a lot of such candidates. Now, what happens, we see your PIQ form, and we keep progressing from that to see as to what your track record has been. So based on that, it may happen that I find that your favorite subject, let us say in your 12th examination, was physics, and you had scored good marks in that, and you say, yes, this was my favorite subject. So now thing is that when we talk of 12th and that physics, it may happen that you say that my favorite topic was optics. So then the questions of optics may come up, and ये प्रिज्म के थ्रू लाइट जाती है, उसका क्या होता है, रिलेशनशिप वेवलेंथ का, फ्रीक्वेंसी का, कलर्स का क्या क्या होता है, स्काई नीला क्यों दिखता है, सूरज रेड क्यों दिखता है राइज और सनसेट पे, सच लाइक थिंग्स यू मे गेट आस्क्ड अबाउट. फाइन. अब आपकी डिग्री तो इलेक्ट्रिकल वाली है, लेकिन अब सवाल तो यहाँ ये चल रहा है, एंड इट मे हैपन दैट it is quite likely that the interviewing officer makes a positive or a negative opinion, forms a positive or negative opinion about your academic competence based on your answer for this itself. Like if I come to know that you know your optics very well, and like I gave some examples, I will ask you these questions, then I may go on to कि human eye कैसे काम करती है, retina पे image कैसी बनती है, क्या होता है real virtual image, inverted है क्या, ये कहानी हम पूछ पाछ के आपका बेसिक फंडामेंटल से हमने ये पता किया. अब आपसे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन पूछने की जरूरत शायद ना ही पड़े, जरूरत ही नहीं है. Now it may happen that he does not talk of favorite subject of 12th and all that, and he says like, अच्छा यार ग्रेजुएशन में बताओ आपका जो था फेवरेट टॉपिक क्या था. अब आप बात बताते हो कुछ उसका कि ठीक है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में आपका इंटरेस्ट रहा है, या अब जो है आप सोलराइजेशन जो ऑल्टरनेटिव वाले उसमें जा रहे हैं, उसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हो. सो देन द क्वेश्चंस मेक स्टार्ट कमिंग अप फ्रॉम दैट. Or it can happen that you are an electrical engineer and having done a BTech degree 2 years back, now you are working in the IT field. That also happens. Then हो सकता है कि सवाल आपके जो है जो आप जॉब कर रहे हो उससे शुरू हो जाए. Fine. So what you now realize is that it is very difficult for anybody to predict as to how the conversation with the interviewing officer goes,
and what kinds of questions start getting posed. What you should do is that be clear about your basics. And that if you are a good professional, your basics would be good and you will not have to bother much. And conversely, if your basics are not up to the mark, it will be very difficult for you to start identifying as to which basics you should improve upon and then get mentally prepared to answer these questions. It will be very, very difficult. A little hint can be that when you write this EKT exam of AFCAT, which is a pretty easy exam, and if you have opted for electrical in that, you have a look at some of the past questions, and from that you can get an idea that generally very basic stuff is asked. कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो ओम्स लॉ तो क्लियर होनी चाहिए कि कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, एंड थिंग्स लाइक दैट इज आई मीन ट्रांसफार्मर कैसे काम कर रहा है, इंडक्शन कॉइल की फंक्शनिंग का क्या बेसिस है. सिमिलरली अगर आप बात इलेक्ट्रॉनिक्स की करते हैं तो ये तो पता हो कि ये सिलिकॉन जो है उसकी वैलेंसी 4 है और ये क्यों व्हाई इट इज अ सेमीकंडक्टर. फिर कैसे आप जो है यू क्रिएट अ डायोड वाल्व, द ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड देन वेरियस अदर थिंग्स. ये सब बेसिक से होता है, तो बेसिक्स आपका ठीक होना चाहिए. So I have given a longish answer because a longish answer was warranted. And please listen to this, anybody who is listening to this recording, to understand as to why it is not that easy to predict कि क्या सवाल इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछ लेगा और क्या आप तैयारी कर सकते हो. ठीक. I hope I have explained it adequately. Thank you very much. Yes, sir. People are asking about marks of SSBs as well. Shivam Yadav has asked, sir, what is the difference between the candidate for consider if the GTO considers and does not consider or reject? He is talking about how many marks do we generally get highest? Let's say out of 300, and someone Sharma has asked, sir, I got 291 out of 300. Perhaps no 291 marks. Where did I lack? So how does one person analyze his marks if at all they find out? Okay. Please go to our website. I have given an answer to this question, which I first gave on Quora and then I shared it on our website also. This is of lot of interest to a lot of people. And I do not like to get you people involved in complexities of SSB. And this is one thing which has got complexities, and I do not want to explain it here because you don't need this knowledge. As far as you are concerned, the knowledge that whether you were cleared or not cleared, which gets announced only, that only is good enough. SSB मार्क्स को इंटरप्रेट करके ये पता करना कि मैं लेक्चरेट में जो था थोड़ा सा और बेटर कर देता या मैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में एक ऑब्स्टिकल और कर देता, उससे कुछ ये चेंज हो जाता, दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन नॉट ड्रॉ सच कंक्लूजन्स एट ऑल. So please do not get bothered about the SSB marks and trying to analyze them. What you people should analyze is which you can gather through introspection or through the feedback you received from your group mates in the GTO task. So that should form the backbone, and you should look at some very basic things like are my communication skills adequate? Do I need to improve? Is my reasoning ability of
a desired level. How I performed in the OIR test, was it good enough? What kind of practical sense I had when we had the group planning exercise discussion? What kind of practical sense I had when we were doing the progressive group task, half group task, and the final command task, and the final group task? Take your mind back, do an analysis of that. See what kind of physical fitness did I have? What was my level of understanding of my core subjects or the job that I am doing? Did I get scared in doing the GTO tasks? What kind of, willpower and determination I have been displaying in my life overall, and I may have displayed in the GTO task, because it has to be in consonance with what your capabilities are. Look for these kind of things. They are going to be, and thereafter work upon them. This mark sharks business is not going to help you. Don't bother for it. Identify the things that I am telling you and work upon them. That would be far more beneficial, because marks are, after all, a function of your overall competence. या तो select हो रहे हो, reject हो रहे हो. तो reject होने के reason जो मैं बता रहा हूँ उनमें से कहीं होंगे. उसको interpret करके आपने marks में डाला हुआ. You don't bother for that. This is what you should be doing. Fine. Okay, thank you. Yes, sir. Aditya Jayant has asked, sir, how would you deal with a superior who does not have a good attitude towards you and does not give enough credit for your work? Is confrontation a good action? No, please repeat the question. I have not understood it well enough. Whatever is written, I can interpret. Superior who is not good towards a person and is whose attitude is not good enough? Superior, senior. Superior, अच्छा, superior का, ठीक. In your workplace. Workplace. Okay, fine. So if I have understood the question properly, the implication is that your workplace superior, his attitude towards you is not good enough. So what you should do about it? Is that correct, Yogita? Yes, sir. So on the basis of what we teach in No Frills Academy is development of proactive nature and proactive muscles. Your prime focus always when you are in such a situation should be to look inwards. Inside out should be the outlook. कि इसने ये बोला कि ठीक ठाक कोई चीज नहीं है, or something which you feel is not okay. So take it कि let me start thinking कि ये problem है कि नहीं है, and see if you can improve upon it. Let us say your superior feels that your job knowledge is not good enough. So you start working to improve upon it. That would be the best thing you can do, rather than bothering about what the superior is doing. And my experience teaches me that most of the time your competence is going to get rewarded or going to get assessed in the long run in accordance with its actual merit. See, today, a lot of people are talking about Virat Kohli. कि उसको निकाल दें, drop कर दें, रखे रहें, क्या करने? Those things are there. Now, ये जो है, now if you put yourself in the shoes of Virat Kohli, then you should look at the statistics. क्या performance है? And that will give you an answer कि हाँ, performance जो है उसमें problem है. अब performance में problem है, तो इसका मतलब आप जो है रेपुटेशन के बलबूते पे चल रहे हो. अब रेपुटेशन के बलबूते पे तो ज्यादा दिन तो नहीं जिंदगी चलने वाली. You have to sort out things. So that is what it should be. Do not like today we have our government ना कि कोई criticism आए तो वो कहते हैं critic को ही कर दो जेल में बंद ना, कि
जुबैर ने हमारी सच्चाई निकाली तो जुबैर को बंद कर दिया जाए जेल में। तो उससे आप इस एटीट्यूड को अगर आप रखोगे ना, आपका भला तो डेफिनेटली नहीं होगा। आप इंप्रेशन अपना लोगों पे फॉल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो पता चल के जाएगी। तो दैट शुड बी योर फर्स्ट आउटलुक। ये जो है, क्या मेरे में ही कोई कमी है तो मैं उसको सुधारूं। दैट विल डू यू अ लॉट ऑफ। नाउ लेट अस टेक इट कि असल में आप जेन्युइनली कॉम्पिटेंट हो, and the feedback the superior is giving or the attitude he is having towards you is not accurate. It is not incommensurate with your capability. So what will happen is, अब वो कितने दिन आपका सुपीरियर चलता रहेगा वहीं पे? 10 दिन नहीं चलेगा, हट जाएगा, and things will start changing. Also, since how he conducts himself is something which is not in your control, it is in your indirect control. That he may be nasty, he may not be behaving well, but you behave well. Because why should you be changing your nature? So you keep doing your job in the most competent and efficient manner possible, in the hope that his attitude changes. And in case it doesn't change, you should not be overly worried, because the problem is at his end, not at your end. This is how you can improve things for yourself. I hope you are getting this point which I am trying to make. कि जो इनडायरेक्ट कंट्रोल आपका इन्फ्लुएंस है वो भी आपके बिहेवियर से ही हो सकता है। उसका अगर बिहेवियर ठीक नहीं है, आप इग्नोर करो, वो कहता है तुमको कुछ नहीं मालूम, तो यू जस्ट लाफ इट ऑफ, यू कीप डूइंग योर जॉब वेल, क्योंकि इट विल बिकम अ लाफेबल थिंग। बिकॉज व्हाट हैपेंस, आपने भी इतनी बात देखी होगी, अगर किसी आप मोटे आदमी को मोटा कहो तो वो नाराज होगा। अगर बिल्कुल कोई स्किनी आदमी उसको तो यार मोटा होता जा रहा था, ही जस्ट लाफ इट ऑफ, वो उसको माइंड नहीं कर सकता है। So that problem will not be there. So that is what you should do. You should focus on yourself, and these things will go off. क्योंकि खाली वही एक थोड़ी सुपीरियर आपके ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस करने वाला और भी बहुत कुछ लोग हैं आसपास, उनको तो पता चलेगा ना आपको जेन्युइन वर्थ कितना है। तो that is what will give you the dividends in the long run. Yeah, one more very important thing. I have seen a lot of people, because of the attitude of their seniors, they change their outlook and attitude, and that is something which is not okay, which will harm them in the long run. मतलब कि सीनियर ने बोला, जैसे हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात करते हैं, तो सीनियर ने अच्छा आपको बोला तो आप एनकरेज हुए और आपने अच्छा परफॉर्म किया, दैट्स गुड। बट नेगेटिव भी इम्पैक्ट होता है, उसने बोला नहीं तू निकम्मा है, यू आर यूजलेस एंड ऑल दैट, एंड यू स्टार्टेड बिलीविंग द नेगेटिव इनपुट्स। तो to some extent that superior who was making these adverse comments was right, though you would have been capable, but आपकी क्रिटिसिज्म लेने की कैपेबिलिटी या डिटर्मिनेशन या सेल्फ बिलीफ में तो कमी थी। क्योंकि ओवरऑल तो हम होल पर्सनालिटी तभी बनते हैं जब सारी चीजें हमारे जो है उनको ओवरऑल तालमेल बिठा के देखा जाए, तो वहां आपकी कमी थी। तो आप ये काम प्लीज मत कर दीजिए कि उसके जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं, नेगेटिव जो एटीट्यूड वो दिखा रहा है, उससे आप अपने कॉन्डक्ट पे इम्पैक्ट आने में, अगर वो आप नहीं आने देंगे, अपना सुधार करते रहेंगे, लॉन्ग रन थिंग्स विल वर्क आउट। यू डोंट हैव टू गेट बॉदर्ड। फाइन, ओके, थैंक यू। Yes, sir. Okay. Tarun Singh has asked, sir, if someone has a tendency to avoid disagreements, confrontation, a very docile nature from a long time, can they bring about change of a recommendation worthy improvement in 4 to 5 months? It is very difficult to lay down a timeline for improvements.
Because you see, there are a lot of things which are involved in changing habits or bringing about improvements in our personal selves. तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज कि आप जो है मोटिवेशन आपका कितने लेवल का है, जो भी आप चेंज करना चाहते हो उसको करने का, राइट? तो दैट इज वन थिंग. सेकेंड इज कि आपकी जो है विल पावर इसको कितनी है, उसको चेंज को इफेक्ट में लाने की. दैट इज द अदर फंक्शन. तो इफ दीज एंड देन द परसिवियरेंस, कि आप मतलब कितनी देर इसमें परसिवियर कर पाते हो. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी एंड देन वर्क अपॉन. जैसे अभी एग्जांपल में पढ़ रहा था, अपने लॉन्ग जंपर का, हमारा जो है वो क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप 8 मीटर तक जंप किया. तो ही वाज एडवाइज्ड बाय रॉबर्ट जॉर्ज कि भाई तुम जो ये पुराना हैंग वाला टेक्निक है लॉन्ग जंपिंग की, उसे छोड़ दो. पहले सिजर्स और हैंग दोनों वाले यूज करते थे लोग, एंड दोनों ही चलता था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था. बोला कि भाई तुमको हैंग छोड़कर सिजर्स वाला टेक्निक करना पड़ेगा, उससे ही इम्प्रूवमेंट आएगा. ना क्या होता है, टेक्निकल चेंज लाने के लिए जो है अब वन सेकेंड टाइम लगता है, वो एकदम से हो नहीं जाता है. मेरे को बोलो सर्विस एक्शन चेंज कर दो, इट विल टेक टाइम. नो एम आई एबल टू पे द प्राइस, एंड इन बिटवीन जब मैं ट्रांजिशन में हूं तो मेरा नेचुरली परफॉर्मेंस खराब होगी. तो मैच अगर पड़ गया तो आई डोंट नो पुराने टेक्निक से करूं नई टेक्निक से, नो दोस कॉम्प्लिकेशंस वुड हैव. सो व्हाट काइंड ऑफ डिटरमिनेशन आई एम हैविंग फॉर दैट. तो इन चीजों के लिए टाइमलाइन ले डाउन करनी जो है वो मुश्किल होती है. बट जनरली आई वुड से इफ यू हैव आइडेंटिफाइड रैशनली कि ये मेरे को आउटलुक चेंज करना चाहिए, जो आपने बात की अभी कि आपका ये आउटलुक ठीक नहीं है, कि आप एग्रीएबल दिखाने के लिए जस्ट टू गेट अलोंग विद योर यू नो कलीग्स एंड ऑल दैट पीयर्स, यू डोंट अपोज थिंग्स व्हिच आर इनकरेक्ट. तो आपको ये लगा कि बात ठीक है, देन यू शुड डिसाइड कि यार मैंने करना है. एंड इसको आप हर उसमें करिए. घर पे भी जो बात हो रही है वहां भी है, ऑफिस में है, स्कूल कॉलेज, wherever you are, do that, stand by the right things, and you will find that it will become part of your nature. How much time it takes, very difficult to predict, but it can definitely be done once the motivation, willpower, and the perseverance are in the right place. Thank you. Sir, Saurabh Bandyopadhyay has asked, sir, if people coming from defense background choose to pursue career in armed forces as a career in later stage of life, not earlier, later, will that throw a bad impression for not trying earlier? You see, thing is that why should you get bothered about these? ये इम्प्रेशन के जब आप चक्कर में पड़ते हो ना, आप अपनी कबर खोदने की तरफ जा रहे हो, आपकी बात बनने वाली नहीं है. वैसे इंडियन सोसाइटी की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम दूसरा क्या करने वाला है उसमें हमारा जोर ज्यादा रहता है कि हम अपने हाथ में क्या है उस पर फोकस करें. अब एक सिचुएशन ये है कि आप फौजी के बच्चे थे, आपने बीटेक किया, आपने ना एनडीए के गए ना आप टीएस में गए, बीटेक करके आपने जो था 2 साल आपने नौकरी की आईटी में, अब अपने काम में फौज में जाना चाहता हूँ, और आप फौज के लिए पहुंच रहे हो, वेदर फॉर एसएससी टेक, टीजीसी, सीडीएस और व्हाटएवर. अब जो है एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर पूछेगा ही कि भाई आप जो थे एनडीए टीएस ये आपने क्यों नहीं किया, बिकॉज ही इज क्यूरियस. He is curious to, sorry, he is curious to know answers to these things because any person would be curious to know. So, इस क्यूरियोसिटी को आप ये मान के चलते हैं कि कोई बहुत बड़ा जजमेंट आपके ऊपर प्रोनाउंस हो जाएगा कि आपको जेल हो जाएगी या आप छूट जाओगे. अब आप उसको जो है मैनिपुलेट करने के लिए आंसर ढूंढने की कोशिश करते, तो वो बिल्कुल मत करिए. आप जो भी आपकी बात थी आप बता दीजिए.
you look at this entire thing from a different perspective. Let us say that I am an interviewing officer. One person comes, candidate comes in front of me, वो ये फौजी बैकग्राउंड का था, सारी अपॉर्चुनिटी थी, उसने कुछ नहीं किया, उसके पास लास्ट चांस है अपना एज वाइज क्राइटेरिया के, और वो अब आया है एसएसबी देने के लिए, एसएससी टेक का, उसने कोई सीडीएस एफएड एग्जाम में नहीं लिखा, एंड आई फाइंड हिम दैट ही इज वेरी गुड, वो अपना ट्रेनिंग आराम से कर सकता है, उसकी सारी कॉम्पिटेंस, मतलब ओएलक्यू शोएलक्यू का भी जो भी चीजें, सारा मामला फिट है, तो व्हाई विल आई नॉट टेक हिम? आई विल डेफिनेटली टेक हिम. So that is the bottom line. So you should focus on enhancing your overall abilities to make yourself fit for selection. That is what you should do. उसको क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उससे जीटीओ क्या सोचेगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या सोचेगा, इसमें प्लीज अपनी जान मत फंसाए. पर खैर मैं बार बार कहता रहता हूँ, आप हिंदुस्तानी लोग हैं, हमारी सोसाइटी इसमें जोर देती है, तो आप करते रहोगे, तो करते रहो भाई. मेरी सलाह आपके लिए ये रहेगी कि ये सब करना असल में बेवकूफी है, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है, इससे आपका टाइम डेफिनेटली वेस्ट होगा. जैसे हमारे कैंडिडेट स्टूडेंट बात करते रहते हैं, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मैं फलाना करता हूँ, तो करना बेवकूफी का काम है, टाइम वेस्ट करना, कर लो. इट विल गिव यू नथिंग वर्थ वाइल. कि अब इंप्रेशन मेरा कैसा पड़ेगा, अब इंप्रेशन कैसा पड़ेगा ये तो वो डिसाइड करेगा जिस पे पढ़ना है. समझ गए बात? ओके, थैंक यू. Okay, sir. We will take the last question. Gaurav Negi has asked, 4 years ago, I attempted suicide, not knowing why I'm doing it, what I'm doing it, due to a failed relationship. I regret about it a lot. Will IO recommend me if he comes to know about it? IO will not only IO, psychologist, GTO, any assessor who comes to know that at one point of time you had attempted suicide, you are 100% rejected, you will never get selected. So this is an absolute definite. So be clear about that. Now what you have to see is that have you genuinely overcome these suicidal tendencies? Or you have chances of dipping back into such things. Take a rational outlook. Consult a psychiatrist or psychologist. Get an idea about yourself. Do you need some help? Some, counseling? And these are the things. Based on that, you should take a decision. Because you see, if you have these tendencies, there could be, I do not know what could be your reasons and all that. Like आपने तो reason तो relationship वाली बात की है, वो तो इतना बड़ा issue फौज के हिसाब से नहीं हो सकता. But stress and strain of work, difficulties, tough work conditions, physically demanding, mentally straining, those things, if they are there and you are susceptible to crack up under such things, it will make sense for you not to go only for defense services, because defense services में इन चीजों का requirement पड़ने वाला है, या आपको प्रॉब्लम होगी, तो जो है ना जाना अच्छा होगा. पर अगर आप सोचते हैं कि आप ठीक ठाक हो गए, generally there is no problem, this is the only thing which I very openly advise people to not disclose. Because this disclosure is assuring your rejection. तो अगर assured है ये revelation, तो इसका मतलब ये, तो फिर जाओ ही मत एसएसबी. अगर आप कहते हो कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा और मेरी जो भी है वो बात मैं बताऊंगा, जैसे मैं एडवोकेट करता भी, बतानी चाहिए आपको, छुपाने का नहीं होना चाहिए. तो अगर आप इसको नहीं छुपाएंगे और बताएंगे, तो आपका रिजेक्शन सर्टेन है, और रिजेक्शन सर्टेन है तो फिर ऐसे भी जाओ ही मत, फिर फौज के लिए कोशिश ही मत करो. फाइन. दैट इज ऑल व्हाट आई हैड टू से अबाउट दिस. थैंक यू वेरी मच. Yes, sir. Nihal Pandey, your present state is more important than your previous state. That's what sir always gives opinion about.
Then regarding medical queries, there are medical experts. You can seek their help. Regarding future, what happens after joining armed forces, let's say paras or Rashtriya Rifles, Rajasthan, your specific regiment, it depends on vacancies. We will answer a few questions later on. Right now, we will wind up. Thank you, sir. Please write to us at nofrills@gmail.com. Thank you very much. Thanks, Yogita. Thanks all the students for attending and posing your questions. It's a pleasure answering all of them. Thank you very much. God bless. Bye-bye.